Okay, so first question, before I start with the string handling, how do I store multiple characters using array of characters? How to store multiple characters using, how do you store? We create we create a character array. Create a character array. And example, we store character array, and we separate each character by, let's say मुझे कोई welcome string store करना है. So I have to write like this. So each character I have to write like this. So this is the pen point with this. So each character you have to enclose inside the single quote. This is how we store the strings. What is the problem? In this approach, in this way, what happens? Every character has to be enclosed in single quote. So what happens with this, which is very time consuming process. इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. अगर आपको कोई डेटा स्टोर करना है तो यू हैव टू राइट दिस. Now I want to reverse or replace W with some other character, or I want to remove some characters from array. So how do I remove some characters from this array? इस पर्टिकुलर array में से मुझे क्या करना है, कुछ characters remove करना है, या क्या करना है, इसमें से सब कुछ सारे अपर केस में कन्वर्ट करना है. हाउ डू आई डू दैट? इसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. इफ आई वांट टू सर्च, सॉर्ट, replace, delete for every operation on this particular array, I have to write the logic, right? So for every operation, such as सर्च करना है मुझे कोई कैरेक्टर्स, या कोई एरे सॉर्ट करना है, रिवर्स करना है, या रिप्लेस करना है, या रिमूव करना है, आई वांट टू अपेंड सम, अपेंड या इंसर्ट, या डिलीट हो सकता है. डिलीट, डेवलपर इज सपोज टू राइट, developer is supposed to write the logic. So developer is supposed to write the logic. Getting the idea? So the problem with this way is we have to write lot of logic. We have to, and this every developer needs this code. कि हर एक डेवलपर का रिक्वायरमेंट होगा ना, डेटा कुछ ना कुछ स्टोर करना है. So for every developer, if he is doing the same logic again and again, it is duplication of code. It is duplication of code. तो हर जगह आप सेम ही कोड लिख रहे हो, हर जगह आप सेम ही कोड लिख रहे हो. So writing the same code again and again, so that will be duplication. Right? Now next, what is final keyword? What is the final keyword? Can anyone tell me what is final keyword before we talk about anything else? What is final keyword? So if a variable is made final, then its value cannot be reassigned. मतलब उसका value एक बार आपने assign कर लिया, then you cannot reassign the value. दूसरा, अगर कोई method final है, if a method is final, it cannot, yes, if a method is final, it cannot be overwritten. Correct? Now if I make a class final, what happens? Right? If a class is final, then it cannot be perfect. What is an immutable class? What is an immutable class? This is also we have seen. Can anyone tell me?
What is an immutable class? Yes, what is immutable class? Yes, online, anyone? Yes, Adiba is saying object content cannot be changed. If a class is immutable, इसका मतलब होता है if a class is an immutable class, then content its content cannot be modified. मतलब एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, दैट्स फाइनल, नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट. वैसा इम्यूटेबल क्लास कैसे बना सकते हैं? हाउ डू वी क्रिएट इम्यूटेबल क्लास? टू क्रिएट है immutable class, we make the class final so that it cannot be extended. Make the class members, class data members final and private, and do not provide, इतना भी चल जाएगा, make the data member private, do not provide the, बस आपने क्लास फाइनल कर दिया और उसके मेंबर्स फाइनल एंड प्राइवेट कर लिया, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट. सेटर वही रहेंगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि फाइनल है तो एक बार डेटा सेट हो गया तो आपका ऑब्जेक्ट चेंज नहीं. Now, whatever the operation we want to perform, now I want to perform operation or I want to store group of characters very easily, so that I cannot do right away with the character array. If I want to store multiple group of values, I that use array properly. कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते. Let's try to do that. I will just take some couple of examples. Then so what I have, I have a array, that is character array, and I want to convert that to uppercase. So first of all, storing the values itself is a pain. If I want to store some values itself, it is a pain. So every character we have to include inside the कोड्स. दैट इज वेरी डिफिकल्ट. अब ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. अब मुझे क्या करना है, इस एरे को अपर केस में कन्वर्ट करना है. हाउ डू यू डू दैट? हाउ डू यू डू दैट? मुझे इस पर्टिकुलर एरे को अपर केस में कन्वर्ट करना है. क्या करोगे आप? आस्की वैल्यू, तो आई विल राइट a for loop which will start from index 0 till array dot length. अगर आपका कैरेक्टर if array of index is greater than or equal to single quote a and array of index is less than or equal to small z, then what do you do? Array of index equal to array of index plus minus 32, and you just typecast that to character. Now just print that particular array char ch. Now, so this is how we convert the array into uppercase. सेम चीज आपको लोअर केस में करना है तो भी लॉजिक लिखना. दिस इज व्हाट वी आर राइटिंग द लॉजिक. वी आर राइटिंग द लॉजिक. ABCD कन्वर्ट हो गया. नाउ what I will do this, I will just convert this into a method, and I will say what it is doing, to uppercase. I want to convert an array into a lowercase. क्या करना पड़ेगा आपको?
let's say I have this array, I want to convert this into an upper lower case. इसके लिए मैंने ये मेथड लिख दिया, what I have converted. So what I will do, I will have some another array, capital A, capital B, capital C, capital D. तो मुझे ये अभी लोअर केस में करना. So what I have to do, I will write the method lower case और उसे पास करेंगे हम. तो इसके लिए मेथड लिखेंगे फिर से हम. क्या करोगे आप, उसके लिए फिर से फॉर लूप लिखोगे आप. फॉर इंडेक्स इक्वल टू 0 एंड विल बी लेस देन array डॉट लेंथ. और क्या करना है आपको, इफ दैट array ऑफ इंडेक्स जो एलिमेंट है अपर केस में करना है, राइट. इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कोट a टू लोअर केस करना था, राइट. एंड array ऑफ इंडेक्स शुड बी लेस देन, अगर है आप क्या करो, array ऑफ इंडेक्स को क्या करो, +32 करो x, क्योंकि उनके ASCII वैल्यू वहां से स्टार्ट होता है. array ऑफ इंडेक्स इक्वल टू प्रिंट किया ना इधर, हो गया. नाउ सिमिलरली आपने क्या कर दिया, टू कन्वर्ट दैट इनटू array वी हैव कन्वर्टेड. नाउ आई वांट टू चेक वेदर द array इज एम्प्टी और नॉट. आई वांट टू चेक इफ द array इज एम्प्टी और नॉट. कैसे चेक करोगे आप, इज array एम्प्टी, प्राइवेट स्टैटिक बूलियन इज एम्प्टी. कैसे चेक करोगे, वो कोई कैरेक्टर array मिलेगा. अब मुझे पता करना है कि array एम्प्टी है या नहीं. कैसे चेक करोगे, अगर उसका लेंथ जो array है, array is not equal to null, if array is equal to null, is not equal to null, it will return true. तो सिंपली array डॉट लेंथ कर सकते हो आप. array डॉट लेंथ इक्वल टू 0 है तो रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स. यहाँ पर इज एम्प्टी कॉल करोगे आप, ये मेथड कॉल कर सकते हो इज एम्प्टी और उसे पास कर दो, फॉल्स आएगा क्योंकि आपका एरे एम्प्टी नहीं है. एम्प्टी होता तो फॉल्स आता. ठीक, सिंपल. अभी जो हम कर रहे हैं, राइट, ये सारी मेथड्स हम खुद लिख रहे हैं. So instead of you writing these methods are written by Java. And where all of these methods are there, all of these methods are there inside one class called as string. There are other classes also, string builder, string buffer. So whatever the operation you want to perform on group of characters, all these operations are present inside the class called as string builder, string buffer. इन classes में आपको ये methods. string handling का मतलब क्या होता है, what string handling does. So what is an string, what is a string, what is string, it represents group of characters enclosed in double quotes. क्या होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लूज इन डबल कोट्स. स्ट्रिंग इज ए concrete class, the concrete class present inside the java dot lang package. कहाँ पर प्रेजेंट है, java dot lang package में क्लास प्रेजेंट है. तो string class contains, क्या क्या है इस क्लास के, string class contains several methods which are helpful to perform operations on group of characters such as searching,
sorting, replace, remove, to convert uppercase, lowercase, and ठीक है। बहुत सारी मेथड्स है जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, यू कैन इजीली store group of values and perform operations in that group of characters. And remembers, it is an immutable class. Immutable class means once string class object is created, its content cannot be right. Content cannot be is an immutable class means once string class object is created, its content cannot be right. The content आप modify नहीं कर सकते. Now there are a lot of things. Who is the parent class of string class? Perfect. So string class overrides equals to string and hash code method, right? Remember, and equals method, remember यहाँ पर याद रखना equals method इस केस में क्या होता है, equals method क्या करती है, equals method checks the equality of two string objects based on content and not on the reference. याद रखना, बहुत सारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डू वी चेक द इक्वलिटी ऑफ टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स. तो स्ट्रिंग क्लास ने क्या करा है, इक्वल्स मेथड ओवरराइड करिए, टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड करिए, हैश कोड मेथड ओवरराइड करिए. Because of that, equals method checks the equality of two string objects based on the content and not on reference. Similarly, toString method, what it does, toString method prints the string object content and not the hash code. तो toString method किसकी कॉल होगी, जब भी आप कॉल करोगे string class की, because that toString method is overridden. That's fine. क्लियर है यहाँ तक? Now this is a class and this class contains methods. So how do we use the methods of this class? उन्होंने क्या किया है, this class they have defined this class, they have just defined the class means they have defined the methods. अभी उस मेथड का यूज कौन करेंगे, who are going to use the methods of this class, they are going to use the class methods. So how do we use the methods of that particular class? मतलब हमें उसको इंपोर्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी तो क्रिएट करना पड़ेगा. इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है इस क्लास को, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इट इज प्रेजेंट इनसाइड द जावा डॉट lang पैकेज. सो जो भी क्लास जावा डॉट lang पैकेज में होता है उनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती. क्या बोल रहा हूँ मैं, जो भी क्लासेस जावा डॉट lang पैकेज में है उनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. दैट इज बाय डिफॉल्ट अवेलेबल, इज बाय डिफॉल्ट अवेलेबल. क्लियर यहाँ तक? इंटर में सब कुछ अभी यही बोलना है आपको. व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज इन डबल कोट्स. स्ट्रिंग it is a concrete class which is present inside the java.lang package, and it contains several methods which are helpful to perform operations of characters such as sorting, searching, replace, remove, uppercase to lowercase, trim, substring, बहुत सारी है. ये तो है. ये प्लस ये एक इम्यूटेबल क्लास है. इसका मतलब कि अगर आप स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसका कंटेंट आप मॉडिफाई नहीं कर सकते. एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दैट्स इट. देन स्ट्रिंग क्लास इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास. तो ये क्या करता है, इक्वल्स टू स्ट्रिंग हैश कोड मेथड ओवरराइड करता है. ऑल मेथड्स इट ओवरराइड्स equals to string and hash code.
क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपको स्ट्रिंग क्लास के अंदर जो मेथड्स है उसको यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएशन, तो यहां पर ध्यान देना, हाउ डू वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास? हाउ डू वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एनी अदर क्लास? कैसे क्रिएट करते हैं? ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट करते हैं, रेफरेंस तो होल्ड करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? कंस्ट्रक्टर कॉल, उससे पहले क्या यूज करते हो? न्यू कीवर्ड, न्यू एंड द कंस्ट्रक्टर कॉल, दैट इज हाउ वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट। So string class object creation, remember, so there are two ways to create string class। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर स्ट्रिंग क्लास का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। उसमें से पहला आपको तो पता ही है, व्हाट इज दैट? यूजिंग न्यू कीवर्ड, और दूसरा एक और है, यूजिंग लिटरल वे। आपको पूछा जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू क्रिएट स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट्स, आपके पास दो ऑप्शन है, यूजिंग न्यू कीवर्ड और दूसरा है लिटरल वे। अभी न्यू कीवर्ड तो आपको पता ही है, हाउ डू वी डू दैट? आप स्ट्रिंग str लिखो, न्यू स्ट्रिंग, और अगर आपको यहाँ पर कोई स्ट्रिंग देनी है डबल कोट्स में, हम स्ट्रिंग वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज हाउ वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट यूजिंग स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट, हाउ वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग। दूसरा लिटरल वे में क्या करते हो आप? स्ट्रिंग str इक्वल टू डबल कोट्स डायरेक्टली यू राइट सम स्ट्रिंग वैल्यू। क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू क्रिएट स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट? दीज आर द टू, पहले तो न्यू कीवर्ड और दूसरा है लिटरल वे। ठीक है, कौन से? हाँ, यहाँ पर पैरामीटराइज दे सकते हो, एम्प्टी भी दे सकते हो आप, ऐसे नहीं कि नहीं, मतलब अगर नहीं देना है। हाँ, लिटरल वे में आप ऐसे कंस्ट्रक्टर देने की जरूरत, यू डू नॉट नीड टू गिव द कंस्ट्रक्ट। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट पहले समझो कि क्या क्या वेज है, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी के लिए एक्चुअली व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू क्रिएट स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट, दीज आर द, क्लियर है? पहले कौन कौन से वेज है? पहला है न्यू कीवर्ड वे और दूसरा है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ दिस, दोनों में क्या डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। How do you create a immutable class? How do you create a immutable class? You make the class final. You make the class final and make the data members private. अभी यहाँ पर देखो आप, जो स्ट्रिंग क्लास है, स्ट्रिंग क्लास का यूज करके आप क्या कर सकते हो? व्हाट यू कैन डू यूजिंग स्ट्रिंग क्लास? स्ट्रिंग क्लास का यूज करके आप क्या कर सकते हो? यस, एनीवन? Using string class object we can store group of characters। क्या कर सकते हैं आप? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आप क्या करोगे? यू विल बी एबल टू स्टोर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक, अभी स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट आप बनाओगे और इंटरनली स्ट्रिंग क्या करेगा? इंटरनली स्ट्रिंग इज गोइंग टू क्रिएट एन एरे, internally it is going to create an array। when we create a string class object, we create when we create string class object internally, string class, when we create a string object internally, string class creates a character array and stores the character। क्या होता है?
जब भी आप कोई स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो इंटरनली स्ट्रिंग क्या करता है, इट क्रिएट्स एन एरे, क्रिएट्स एन एरे, स्टोर्स द कैरेक्टर। क्या करता है, जब भी आप स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो इंटरनली देखो यहाँ पर स्ट्रिंग str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, जैसे आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, यहाँ पर देखो दिस डॉट वैल्यू, मतलब ये करेगा क्या, here this dot value, what is the value, value is nothing but a character array, what is value, value is nothing but a character array। तो जब भी आप कोई स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इंटरनली वो क्या क्रिएट करता है, कैरेक्टर array, it creates an character array। ये क्लियर है ये वाला, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी यूज स्ट्रिंग क्लास एंड व्हाट हैपेंस इंटरनली। ठीक है, अभी let's try to understand, I have created an object using new keyword way and there is another way, what is that another way, using new keyword। अभी दोनों में difference क्या है, we will try to understand this, there will be a lot of questions on this, how many where objects are created, how object is created। So this object I am going to create using literal way, so this is using literal way। Now as you know that whenever we try to print a reference, what happens, whenever we try to print any reference, what happens, internally it is going to call which method, which method it is going to call, जब भी हम कोई रेफरेंस प्रिंट करने का ट्राई करते हैं तो इंटरनली कौन सी मेथड कॉल होती है, कल नहीं थे, परफेक्ट। तो इंटरनली क्या करता है, कॉल टू स्ट्रिंग मेथड, तो टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होती है इंटरनली। और आप देखो यहाँ पर टू स्ट्रिंग मेथड तो ओवररिडन है, तो टू स्ट्रिंग मेथड ओवररिडन मतलब क्या होगा, इट विल प्रिंट द कंटेंट ऑफ स्ट्रिंग, दैट इज एबीसी एंड XYZ, इट विल प्रिंट। अगर आप टू स्ट्रिंग नहीं भी कॉल करते हो ये सेम ही आउटपुट है, ठीक। सो यू डू नॉट नीड टू कॉल दिस मेथड। So toString method is originally present inside the object class and that is overridden by string class। What happens? Originally कहाँ पर है आपकी string class, वो toString method object class में, that object class method is now overridden inside the string class, that's why it is print। Clear है, what is string, what are the different ways to create string class objects, clear? Okay, now we'll try to understand what is the difference between these, what is the difference between these two। I'm creating two objects, str1 equal to new string abc and str2 equal to abc। I'm writing two words, str1 equal to str2 and str1 dot equals, what is the output in this guys, कौन सा वाला ट्रू आएगा, this will be false, yes, and what about this, में क्या आएगा, anyone online, का आंसर आएगा ट्रू। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या चेक हो रहा है, यहाँ पर चेक हो रहा है सिंपल से आपका रेफरेंस, str1 और str2 दोनों का रेफरेंस चेक हो रहा है, तो दोनों रेफरेंस अलग अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, दिस इज आल्सो अनदर न्यू ऑब्जेक्ट, दिस इज अनदर न्यू ऑब्जेक्ट, so there are two references pointing to two different objects, तो दोनों यहाँ पर false आएगा। और str1 dot equals str2 equals method is overridden inside the string class and ये क्या करती है, उन दोनों का कंटेंट चेक करती है,
इसलिए यहाँ पर आएगा ये क्लियर है, ये क्लियर है क्यों ऐसा हो रहा है? मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस गाइस बिकॉज देयर विल लॉट ऑफ क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट, I am creating object using this. What is the output in this case? ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है। What is the output in this case? सेम आएगा। ये यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं है, दिस विल बी द सेम थिंग। यहाँ पर क्या लगता है आपको? यहाँ पर भी फॉल्स ही आएगा। लेट मी टेल यू, आई एम क्रिएटिंग str3। नाउ टेल मी द आंसर। इज str2 equal to str and str2 dot equals str3। What is the output in this case? I know you will not be able to answer, or maybe ये यहाँ पर तो कोई क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर तो आप सीधे सीधा बोल सकते हो ट्रू। यहाँ पे कोई नहीं, बस यहाँ पर कंफ्यूजन। str2 एंड str3 दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है या सेम है? अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वी हैवंट लर्न दिस कॉन्सेप्ट बट इसका आंसर है ट्रू। ये ट्रू कैसे आता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके लिए आपको समझना है कि दोनों में क्या अंतर है। चलो ध्यान देना यहाँ पर। अभी जो आपने क्वेश्चन देखा, इसको कंफ्यूजन हटाने के लिए देयर इज अ थ्योरी बिहाइंड दिस। व्हाट इज द थ्योरी? सिंपल। अभी जब आप न्यू कीवर्ड का यूज करते हो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, तो होता क्या है देखो। तो उससे पहले आपको एक और चीज आपको बता दूं, व्हाट इज एससीपी। व्हाट इज एससीपी? तो एससीपी इज नथिंग बट अ स्पेशल मेमोरी एरिया। और यहाँ पर आपका लेट से हीप है, और हीप के अंदर उन्होंने एक स्पेशल मेमोरी एरिया का नाम है एससीपी। क्या नाम है उसका? एससीपी। एससीपी का नाम हीप, हीप के अंदर एक पार्ट है, उन्होंने क्या क्रिएट किया है? एससीपी। एससीपी का नाम है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी। क्या नाम है उसका? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी एरिया। क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी एरिया। ये कहां पर एरिया है? हीप के अंदर। अभी इस पर्टिकुलर मेमोरी एरिया में, इस पर्टिकुलर मेमोरी एरिया में क्या रहेगा? इस पर्टिकुलर मेमोरी एरिया में रहेगा बस ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। क्या रहेंगे? ऑब्जेक्ट्स। क्या रहेंगे इसमें? ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। लेकिन कौन से ऑब्जेक्ट्स? इस पर्टिकुलर मेमोरी एरिया में रहेंगे बस स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट्स। कौन से रहेंगे? स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट। इसके अलावा दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं। लेट मी टेल यू, इस पर्टिकुलर मेमोरी एरिया में कौन से ऑब्जेक्ट्स रहेंगे? स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट। ये पहला बेसिक है। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एससीपी? एससीपी स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी एरिया। और इस पर्टिकुलर मेमोरी एरिया में कौन से ऑब्जेक्ट्स रहेंगे? स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेरी सिंपल। अभी इसमें स्ट्रिंग क्लास के कौन से ऑब्जेक्ट्स रहेंगे? स्ट्रिंग क्लास के इसमें रहेंगे ओनली यूनिक ऑब्जेक्ट, यूनिक कंटेंट ऑब्जेक्ट्स। कौन से रहेंगे? यूनिक कंटेंट ऑब्जेक्ट।
ध्यान देने वाली बात है, यूनिक कंटेंट ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट रहेंगे? यूनिक कंटेंट ऑब्जेक्ट। मतलब लेट से मैंने दो अभी ऑब्जेक्ट्स बनाए, लेट से एबीसी सेम लगाए मैंने, तो एबीसी एक ही बार स्टोर होगा। एबीसी दो ऑब्जेक्ट है तो एक ही बार स्टोर होगा। क्या होगा? एबीसी है तो दोनों दो बार क्रिएट नहीं हुआ, दैट विल बी क्रिएटेड ओनली वंस। So string constant pool memory area is the special memory area which is created to store the string class objects only. No any other object will be entertained into particular memory area. अभी यहाँ पर जो string class के objects रहेंगे वो सारे कैसे रहेंगे? यूनिक का क्या रहेगा? यूनिक कंटेंट ऑब्जेक्ट रहेगा। ये दो सेकेंड पॉइंट याद रखना। पहला है ये स्पेशल मेमोरी एरिया है और इस पर्टिकुलर मेमोरी एरिया में बस स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट्स ही रहेंगे। कौन से रहेंगे? स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट्स ही। और इस पर्टिकुलर जो मेमोरी एरिया में यहाँ पर जो स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट्स है, दोज ऑब्जेक्ट्स विल बी यूनिक कंटेंट ऑब्जेक्ट, मतलब उनका कंटेंट यूनिक रहेगा। सेम कंटेंट वाले दो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेंगे आपको। एबीसी एबीसी एक ही मिलेगा, एक्स वाई जेड एक ही मिलेगा। ये क्लियर है फर्स्ट ऑफ ऑल? ओके। So let's try to understand this point. This is very important, guys, in order to understand rest of the things. चलो अब ये हमें समझना है what are the different ways to create string class objects. There are two options. One is using new keyword और दूसरा है using literal option. दूसरा है literal option, new keyword and literal. अभी दोनों में क्या डिफरेंस है literal और new keyword में? Let's try to. सबसे पहले ध्यान देना यहाँ पर, जब आप न्यू कीवर्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, न्यू कीवर्ड का यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो क्या होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. So there are two memory areas. One is heap and another one is SCP. तो जब भी आप न्यू कीवर्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, जब भी आप कोई भी क्लास का जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो यूजिंग न्यू कीवर्ड, दैट ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज बी सेव्ड एट द पर सेव होता है without checking anything. Without checking anything, compulsorily object is created inside the heap. ये रहे पहला बेसिक। क्या बोल रहा हूँ मैं? दुनिया का या जावा का जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो यूजिंग न्यू कीवर्ड, दैट ऑब्जेक्ट विल बी कंपल्सरीली स्टोर्ड इनसाइड द हीप। न्यू कीवर्ड, जब भी आप न्यू कीवर्ड यूज करते हो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर स्टोर होगा? हीप में। चलो पहली बात। अगर आप स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो यूजिंग न्यू कीवर्ड, कंपल्सरीली ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड इनसाइड द heap, as well as object will be also created inside the SC. क्या बोल रहा हूँ? वंस अगेन, जब भी आप कोई न्यू कीवर्ड यूज करते हो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए स्ट्रिंग क्लास का, तो पहला तो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड इनसाइड द हीप विदाउट एनी चेक। दूसरा, object will be also created inside the SCP, but there are terms and conditions. What is the term? The term is that there will be only unique string content will be present. क्या रहेगा यहाँ पर? Unique content object will be there. Now see here, अगर मैं दो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, string s1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ध्यान देना यहाँ पर abc, और दूसरा ऑब्जेक्ट दे रहा हूं मैं स्ट्रिंग s2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग abc, और एक और ऑब्जेक्ट में बना रहा हूं स्ट्रिंग s3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग इक्वल टू x वाई। तीनों ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर।
तो आप मुझे बताओ हीप में कौन कौन से ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे एंड एससीपी में कौन कौन से ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। पहली बात करते हैं S1 की। S1 इक्वल टू क्या लिखा है आपने, न्यू स्ट्रिंग एबीसी। तो ऑब्जेक्ट कहां पर क्रिएट होगा, पहला तो एबीसी यहां पर क्रिएट होगा, यस परफेक्ट। और एससीपी में भी होगा, यस एबीसी। दूसरी बात करते हैं S2 की। S2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग एबीसी, तो हीप में ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यस परफेक्ट। एससीपी में यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं, तो बिकॉज एबीसी कंटेंट इज ऑलरेडी देयर, एबीसी कंटेंट इज ऑलरेडी देयर इनसाइड द एससीपी, तो एससीपी में ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं, ऑलरेडी एबीसी इज देयर। देन S3, यहाँ पर S3 इक्वल टू एक्स वाई जेड था, तो यहाँ पर भी होगा और पर भी होगा। तो टोटल हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, 5। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, 5। और ध्यान रखना, जब भी आप न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो वो रेफरेंस हमेशा पॉइंट करता है ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इनसाइड द हीप, नॉट प्रेजेंट इनसाइड द एससीपी। ध्यान रखना, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी आप न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो पहले तो विदाउट थिंकिंग हीप में ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और एज वेल एज इट विल बी क्रिएटेड इनसाइड द एससीपी। if the object content is already there, it will not create. If the object content is already not there, it will create the object. And S1, S2, S3 will always point to an object which is present inside the heap. तब जब भी कोई आप न्यू कीवर्ड का यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो रेफरेंस हमेशा कहां पर पॉइंट करेगा, हीप में। क्लियर ये वाला पहला पॉइंट। कैन यू जस्ट से what I have told just now, what is this point? हीप में कंपलसरी क्रिएट हो, एससीपी में कंपलसरी क्रिएट होगा क्या, कंटेंट है या नहीं। इफ द कंटेंट इज ऑलरेडी देयर इट विल नॉट क्रिएट, इफ द कंटेंट इज नॉट देयर इट विल क्रिएट। ठीक। Now second thing, this was for the new keyword way, this was using new keyword way. We'll come to that, why it is created, why SCP is introduced. I will tell you that what is the reason why objects are created inside the SCP. There is a big reason that in short, in conclusion, I will tell you that was created to save the memory. We'll talk about that. अभी लिटरल वे का समझते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज क्रिएटेड। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड लिटरल वे। तो जब आप लिटरल वे से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ध्यान रखना, हीप में ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ही नहीं। अगर आप लिटरल वे से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो स्ट्रिंग क्लास का, तो हीप में आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ही नहीं। अगर होगा तो किधर होगा, एससीपी। यहाँ पर 100% क्रिएट होगा ही नहीं। अगर होगा तो किधर होगा, एससीपी में। अगर एससीपी में कब होगा, अगर ऑब्जेक्ट का कंटेंट ऑलरेडी नहीं है तो। अगर ऑब्जेक्ट का कंटेंट ऑलरेडी है तो किधर क्रिएट होगा, क्या क्रिएट कब होगा, जब ऑब्जेक्ट कंटेंट ऑलरेडी नहीं है तो। चलो इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। नाउ आई हैव सिमिलर string s1 equal to abc, string s2 equal to abc and string s3 equal to xyz। आप मुझे बताओ यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा s1, s2 एंड s3। पहली बात तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ही नहीं, हीप में होगा तो किधर होगा, एससीपी में। अगर अभी एबीसी यहाँ पर है क्या, अगर एबीसी यहाँ पर है क्या, लेट्स दिस इज अ फ्रेश प्रोजेक्ट, थिंक ऑफ, यहाँ पर एबीसी है क्या, नहीं है, तो एबीसी क्रिएट होगा, परफेक्ट, ये हो गया। और S2 इक्वल टू एबीसी, पहले तो हीप में क्रिएट होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर एबीसी फिर से एससीपी में क्रिएट होगा क्या, नहीं। देन दिस S2 will point to this ABC and this S1 will also point to this particular
ABC, दोनों कहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं? This ABC. Now S3 XYZ will be created. Yes, XYZ will be created inside the, and this S3 will point to this particular. Clear है? Clear है? ये कैसा है? So your question, why the objects are created inside the SCP? We'll talk about that. There is also favorite interview question on why SCP is introduced. So simple, I will tell you to improve the memory. How it is improving the memory, that also we will talk about. यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, why string class objects are immutable? That question. Why string class objects are immutable? Why objects are created inside the SCP? We will talk about that again. Now, let's see this. Now, can you tell me the difference? This line, two objects are created, one inside the heap, one inside the SCP. This line, whether the object is created, either this line object is not created because ABC is already there. Then again string str3 equal to ABC, whether the object is created? No, object is not created. So total how many objects are created here? One in heap and one in SCP. Where S2 and S3 are pointing? Only one object which is there inside the literal SCP. SCP में जहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट ABC, वहाँ पर दोनों str2 एंड str3 पॉइंट कर रहे, इसलिए दोनों का रेफरेंस क्या है? सेम. और str1 कहाँ पर पॉइंट कर रहा है? str1 is pointing to an object inside the heap and str2 is pointing to an object which is present inside the SCP. तो इसलिए ये आया false और ये आया true, क्योंकि str2 and str3 are pointing to both the objects, to both the reference to the same object inside the SCP. Clear है? Creating one more time, string str1 equal to ABC, str2, str3, str4 और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं string can you tell me now this one str1 equal to str2, str1 equal to str3 and str1 equal to str. What is the output in this case? In this case true. Okay, and this one, this will be false. What about this? False. And what about this str3 and 4? This will be also false. Why? Because str3 is pointing to an object present inside the, str4 is pointing to another object inside the, तो दोनों अलग अलग है. यहाँ पर बस एक ट्रू आएगा और बाकी सारे. हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड? देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड. हाउ मेनी? कौन कौन से लाइन पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ? यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ. इस लाइन पर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ? इस लाइन पर? कहाँ पर? हीप में, एससीपी में क्रिएट हुआ. यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 2 3. क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? व्हाट आर द डिफरेंट वेज? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस? लिटरल वे ऑब्जेक्ट क्रिएशन. व्हाट इज द डिफरेंस? What is SCP? SCP stands for
string नहीं, string constant full memory is the SCP is the special memory area which stores only string class objects, string class objects, class objects, string class objects, right? Now inside the SCP, inside the SCP, only unique नहीं, बाकी क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं, बस ओनली स्ट्रिंग क्लास. Remember, only one and only string, no other class, not string builder, not string buffer. Inside the SCP, only unique string content objects will be there. And दूसरा, remember, string builder, buffer as objects won't be stored inside the heap में है, बाकी सारी दुनिया की heap में. Using new keyword, if you are using new keyword, string class objects will be created inside the heap compulsorily and in the SCP also if the string object content is not. Literal way, string class object won't be created at the only unique string class content object be created. The reference will always point to the object present inside the, and in this case reference will always point to the object present inside the. ये दोनों याद रखना. क्लियर है? Clear? Yeah. Just go through this. Have the basic understanding. Next class will have the method. सारे methods हम शुरू करेंगे. Next class it will be complete. ज़्यादा कुछ next class it will be. ठीक, तो पहले बेसिक्स गो थ्रू करो. Equal to equality and literal way. Check how many objects are created, where objects. Why string class objects table. Can you tell me why string class objects are? If you see here, you know that unique content object will be present inside the SCP. So here there will be multiple references pointing to that particular object. I will say आपने 10,000 objects बनाए S1, S2 like this. So all these references will point to that particular object. All these references will change point to that particular object.
And if I change that object, what will happen? All the references will be affected. So to avoid that, this particular object is guaranteed that this content will not be. So this object content is never going to be clear.